अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द MCQs ऑफ जर्नलिज्म और ये MCQs आपको हेल्प करेंगे लेक्चरर के पेपर में भी और आपका CSS में जो मैथ्स कॉम का पेपर होता है उसमें भी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है येलो जर्नलिज्म डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम एन अर्ली कॉमिक कैरेक्टर कॉल्ड, और इसका सही जवाब है येलो किड। At first, yellow journalism had nothing to do with reporting, but instead derived from a popular cartoon strip about life in New York slums called Hogan's Alley, drawn by Richard F. Outcault. This featured a yellow-dressed character named the Yellow Kid. Next question is, which is the face of newspaper? इसका सही जवाब है masthead. Masthead is a statement printed in all issues of a newspaper, magazine or the like, usually on the editorial page, which gives the publication's name, the names of the owner and staff, also called a nameplate. A line of type on the front page of a newspaper or the cover of periodical giving the name of the publication. Next question is, name the first communication satellite which was launched in 1962. इसका सही जवाब है Telstar 1. It was an American built Telstar 1 communication satellite और ये लॉन्च हुई थी 10 जुलाई 1962 को. It relayed the first transatlantic television signals. Pierce's team at Bell Labs also developed Telstar 1. The first active communications satellite capable of two-way communications. Next question is, which of the following was developed the earliest? इसका सही जवाब है AM, which stands for amplitude modulation. AM broadcasting began around 1920. FM broadcasting was introduced in the late 1930s with improved fidelity. A broadcast radio receiver is called a radio. Most radios can receive both AM and FM and are called AM/FM receivers. Next question is, dash is associated with the invention of printing. इसका सही जवाब है Johann Gutenberg. By 1440, Gutenberg had established the basics of his printing press, including the use of a mobile, reusable set of type, and within 10 years he had constructed a working prototype of the press. In 1454, Gutenberg put his press to commercial use. Next question is, some stories that wrap similar events into a single story is called. इसका सही जवाब है round. जैसा कि हम देखते हैं न्यूज़ में कुछ हमें स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग की जाती है डिफरेंट एरियाज से, जैसे कि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, उसको हम जर्नलिज्म की लैंग्वेज में राउंड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीडर राइटर इज वन हु राइट्स द. इसका सही जवाब है एडिटोरियल. लीडर राइटर यूजुअली एक ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट होता है जिसको एडिटोरियल लिखने का टास्क दिया जाता है, either in the absence of the editor or in cases where the editor chooses not to write editorials because their editorial skills may rest more in management of the company than in writing daily editorials. Next question is, dash is a detailed account of the coming event. इसका सही जवाब है curtain raiser. Next question is, condensing a story is generally referred to as in the newspaper offices. इसका सही जवाब है boiling down. Condensation basically एक ऐसा process है जिसमें water vapors को, जो कि एक gaseous form में मौजूद होते हैं, उनको liquid form में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. आपको पता होगा कि गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, whereas लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली करीब आ जाते हैं और कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो इस चीज़ को याद रखना इसलिए आसान होगा क्योंकि कंडेंसिंग अ स्टोरी का मतलब होता है किसी स्टोरी को श्रिंक करना, उसको शॉर्ट करना.
उसको किसी वर्ड लिमिट तक लेकर आना. फॉर इंस्टेंस एक स्टोरी अगर 500 वर्ड्स की है तो आप उसको कंसाइज करके 100 वर्ड्स पर या 150 वर्ड्स पर ले आए. तो दैट इज़ एक्चुअली कंडेंसिंग अ स्टोरी, जिसको जर्नलिज्म की लैंग्वेज में बॉइलिंग डाउन भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इज डन बाय. इसका सही जवाब है OPR, एंड OPR स्टैंड्स फॉर ऑफिस ऑफ प्रेस रजिस्ट्रार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड न्यूज़ इज. तो इसका सही जवाब है डेली पब्लिक न्यूज़. Hard news is typically used to refer to topics that are usually timely, important, and consequential, such as politics, international affairs, and business news. Conversely, soft news topics include entertainment, celebrity, and lifestyle news. Next question is one or two word small headline appearing on the left hand top of the story is. इसका सही जवाब है slug. Next question is the main headline on the top of a page covering all columns is known as. The correct answer to this question is banner. Next question is sensation is the main feature of journalism. इसका सही जवाब है yellow. Yellow journalism को normally sensationalized headlines और sensationalized news के साथ associate किया जाता है. Nowadays, television and the internet make good use of yellow journalism by running sensationalized headlines typed in big, vivid fonts consisting of news that is less than well researched. But the best example of yellow journalism can be found today in social media venues such as Twitter or Facebook. Next question is removing unwanted area of picture is called. इसका सही जवाब है cropping. Next question is dash is not a factor in editing process. तो इसका सही जवाब है conflict. अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो आपको नज़र आएगा कि checking itself is an editing process, cutting भी एक editing process है, changing भी एक editing process है. So we are left with the option of conflict. Next question is one line copy that describes the illustration, drawing or photograph is known as. इसका सही जवाब है cut line. Journalism में cut line is the text below a picture explaining what the reader is looking at. It's what most people call a caption, but to a journalist, a caption is more like a title, while the cut line first describes what is happening in the picture and then explains the significance of the event depicted. Next question is obituaries should always be. इसका सही जवाब है posthumous. इन दोनों टर्म्स को मैं आपके साथ briefly explain करती चलूँ. Obituaries means a notice of a death, especially in a newspaper, typically including a brief biography of the deceased person. Whereas posthumous is promotion, is an advancement in rank or position in the case of a person who is dead. For instance, if someone dies और उसको उसकी डेथ के बाद कोई रैंक दिया जाता है, कोई पोजीशन दी जाती है, कोई अवार्ड दिया जाता है, उसको हम posthumous कहते हैं. Next question is slander and libel is associated with. इसका सही जवाब है defamation. Libel and slander ये दोनों defamatory statements की types हैं, but there is a difference between the two. Libel एक ऐसी defamatory statement है वो जो कि written होती है. Slander एक ऐसी defamatory statement है जो कि oral होती है, verbal होती है. At common law, libel and slander were analyzed under different set of standards, with libel recognized as the more
serious wrong. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंडेटरी डेडलाइन फॉर द रिलीज ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है एम्बार्गो। When a communications or public relations team sends a news release or media alert to reporters ahead of the scheduled release of the information. बेसिकली होता क्या है कि समटाइम्स आपको कोई न्यूज़, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपने एक्सपोज नहीं करनी होती टिल अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो उस पर एक डेडलाइन दी जाती है कि ये इस डेट से पहले या इस टाइम से पहले इस न्यूज़ को रिलीज़ ना किया जाए, उसको एम्बार्गो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियंस वाज ऑथर्ड बाय, इसका सही जवाब है एडवर्ड आई बर्ने। इट वाज अ सेमिनल वर्क ऑन हाउ पब्लिक ओपिनियन इज क्रिएटेड and shaped. Edward Bernays' 1923 classic Crystallizing Public Opinion set down the principles that corporations and government have used to influence public attitudes over the past century. कि किस तरह से हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी डिफरेंट कॉरपोरेशंस हैं, वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं, और पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेरिशेबल, इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड जर्नलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डायर्नलिस। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे हमें जर्नलिज्म की टर्म मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडिट्स लोकल न्यूज़, तो इसका सही जवाब है सब एडिटर। Dash is a copy and pictures running over 2 pages in the middle of the newspaper. The correct answer is center spread. Next question is a piece of news obtained and published by one newspaper before its competitors is known as, इसका सही जवाब है exclusive. Next question is the oldest established news agency in the world is, इसका सही जवाब है AFP. AFP stands for Agency France Presse. ये दुनिया की सबसे पहली न्यूज़ एजेंसी थी। It was started in 1835 in Paris as Agence Havas and one of its early employees was Paul Reuter. अगला सवाल है the four theories of press is conceived by, इसमें हमारे पास जवाब है both A and B. A में हमारे पास है W. Schramm and B में हमारे पास है Fred Peterson। और जो 4 theories की बात हो रही है वो है द अथॉरिटेरियन थ्योरी, द लिबर्टेरियन थ्योरी, सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया represents the convergence of text, pictures, video and dash into a single form. इसका सही जवाब है sound. Thank you for watching this video. We will come up with new videos related to journalism and other subjects. Till then, stay tuned.